Maharashtra's pot boiler continues to simmer after the Lok Sabha results of the 48 seats in the state. The focus now is on the assembly polls later this year. Shiv Sena UBT was in a huddle at the Sena Bhavan with Uddhav and all leaders in attendance. All is not well in the Mahavikas Aghadi camp. Congress has expressed displeasure over Uddhav Thackeray's Shiv Sena unilaterally announcing candidates for the upcoming Legislative Council election. But Uddhav Sena maintains that there is no dispute and that they are working together for the assembly elections. आज की बैठक अहम इसलिए थी कि शिवसेना जो 288 विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी इस महाराष्ट्र में है, 288 जगह के लिए शिवसेना के संपर्क के लिए प्रमुख शिवसेना ने अपॉइंट किए हैं, क्योंकि आने वाले समय विधानसभा जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें तैयारी हमारी अच्छी तरीके से पूरे 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में होनी चाहिए। हम तो अलायंस से लड़ने वाले हैं, लेकिन ताकत हमारे हर जगह होनी चाहिए, इस हेतु से मीटिंग हुई। On the other side, NCP was in damage control mode over what it termed as the opposition's false narrative of internal disputes. परवाच्या दिवशी आमदारांची बैठक झाली, सगळे आमदार उपस्थित होते. डॉक्टर शेंगणे नव्हते कारण त्यांच्या सख्या चुलती वारल्या होत्या, त्यावेळी नव्हते, पण कारच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने होते. डॉक्टर बाबा आत्राम यांचं ऑपरेशन त्या ठिकाणी झालेलं होतं. सुनील अण्णा बनसोड सुद्धा घेऊन गेलेले होते, पण केवळ मुद्दाम होऊनच काहीतरी एक नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. But clearly, all is not well in NDA alliance in Maharashtra. After losing to the opposition MVA, discontent and disappointment have been escalating among allies. Ajit Pawar-led NCP secured only one seat out of 4. The party demanded a cabinet berth but was denied. I did have a reservation to accept a MOS independent charge as it would be for me personally coming down or demotion. In contrast, the Sena won 7 out of 15 seats. Eknath Shinde too sought a cabinet berth and 2 MOS positions, but was just given 1 MOS berth. मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. Meanwhile, rumblings about Ajit Pawar NCP and Shinde Sena MLAs being in touch with MVA is growing stronger. There were also rumors of Uddhav Thackeray joining the NDA, which was rubbished by MVA leaders. उद्धव ठाकरे जो स्टेज पे बोलते हैं वही काम करते हैं, उसी दिशा से काम करते हैं. मुझे पूरा यकीन है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही हमारी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ेगी. The Mahayuti too has rubbished talks of their MLAs being in touch with the other camp. आणि जे सातत्याने बातम्या देण्याचा प्रयत्न मीडियामध्ये आम्ही पाहतोय की कोणतरी आमचे विरोधक सांगतात की आम्ही ह्यांनी संपर्क साधला, त्यांनी संपर्क साधला, असं काही झालेलं नाहीये. सगळ्या आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमच्या बरोबर आहेत. MVA has clearly come out stronger post Lok Sabha election despite splits and realignments that it faced. On the other hand, power struggle in Mahayuti continues. The alliance needs to iron out differences ahead of assembly elections. Otherwise, similar problems like seat realignment, seat issues and coordination problems will continue to haunt them and affect their performance in assembly elections as well. With video journalist Sunil, this is Radhika Ramaswamy for NDTV Mumbai.